Assalamu alaikum, Altaf sahab. Can you hear me? Yes, I can hear you. Thank you. Should we start or should we wait for a few moments? Just wait for 2 minutes and then we can start. Okay, thank you. Right. All right, Altaf sahab. Should we start? Please go ahead. Thank you. Yes. Assalamu alaikum. My name is Uzair Ali, working as project coordinator at PASA Echo Pakistan, and I welcome you all to another Echo session. Before I introduce our expert for tonight's session, we have to go through some standard announcements. We are a part of a global movement called Project Echo based in USA with an objective to disseminate knowledge and best practices. We do protect patient privacy, so none of the information used in this session will identify any individual or patient. For maintaining discipline, you all are muted, but we do encourage participation, so you can unmute yourself for questions or use raise hand options in the chat box. By participating, you have given the consent for recording. The recorded session will be available on our YouTube channel, whose link will be shared in the chat box soon.
For CME credits, the link has been shared in the chat box. Please fill in the link at the end of this session, and this link will be active for 12 hours only. For convenience of folks, the session is bilingual. Please speak in English or Urdu, whatever language you are comfortable in. Our expert for tonight's session, Professor Altaf Alam, is former professor and head of gastroenterology department at Sheikh Zayed graduate medical institute, Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan Medical and Dental College, Lahore, Pakistan. He's trained gastroenterologist with more than 20 years of experience in his specialty and is author of more than 50 publications. He's serving as course director at PASA Pakistan since beginning. He is responsible for developing curriculum, observing quality of content, evaluating speakers, and feedback evaluation. We have two cases, and Dr. Kainat will be presenting the case. So I will be sharing the screen, and Dr. Kainat, you will be presenting the cases. Oh, just a moment. Dr. Kainat, can you see the screen? Yes, Uzair. Please present the first case. Okay. Assalamu alaikum. My name is Dr. Kainat Khalid, and I'm working as the medical officer in PASA Trust. So our first case is a 32 years old female who presented in OPD with complaint of abdominal pain and itching on body. On examination, she looked paler. Jaundice was positive. She had no previous medical history. Family history is also insignificant, no history of liver disease. Investigations are on 3rd February 2022. Her HB was 13.6, TLC 10.67, platelet 250, bilirubin was 8.2, ALT 1350, AST 493, alkaline phosphatase 383, and albumin was 3.6. On repeating on the 7th February 2022, her bilirubin increased to 22.5. Bilirubin direct was 1.6 and indirect was 20.9. And on after almost 10 days, on 18th March, or sorry, after 1.5 months almost, on 18th March, her bilirubin was 1.6, ALT was 20, AST 21, alkaline phosphatase 171, and albumin was 4.1. Her anti-HCV core IgM was positive, HAV IgM was negative, HEV IgM was also negative, HBS surface antigen was positive, and anti-HCV is negative. Ultrasound abdomen was normal. My question is that, do we need any further investigation? And secondly, how should we manage this patient? Thank you. Thank you, Dr. Kainat. So this is a young lady presenting with pain and itching, and on investigation, she has a typical picture of acute viral hepatitis. At this stage, alkaline phosphatase was 383, so probably some degree of cholestasis producing itching. Of course, on follow-up, if it persists, you have to look at other options. But once you have all this profile, this is typical of acute hepatitis B. For the diagnosis of acute hepatitis B, you just need two tests, surface antigen and anti-HBC IgM. But whenever hepatitis B is positive, whether acute or chronic, please don't forget to look for delta. So anti-HDV is one test that I would certain. And so an acute viral hepatitis, high bilirubin, patient's condition, and INR. These are the three tests which decide what you are going to do. Patient is good, no flap.
no, the vomiting and the general symptoms are settling. The bilirubin is coming down. ALT and AST are falling as they normally do. INR is normal, then you don't have to worry. But if the bilirubin is high and along with it, INR is also high, what we mean by 1.5. So high INR, high bilirubin, deteriorating condition of the patient is one worry where you may decide to do something more. We'll talk about it later in the second question. But if you ask about investigations, I'm happy with the investigations given. I would also like to have INR and 11, 12 participants here. And we also have some senior people, Kamran, we also have Zishan. So I will ask everybody, do you think any other investigation should be done at this stage? Anyone? Sir, thank you for asking. The G4 IgM positive, confirming the acute nature. As a primary practitioner, I don't think so. Other than INR, they should be following anything else. That because INR is important if the patient is complicating with acute liver failure, that is the complication 1% chances, but still there. So you can look for that. Otherwise, in HDV is concerned, it is as far as we are concerned in the Sindh, it is really relatively common. Karachi and the upper Sindh districts are very known to have high burden of HDV. So as a routine, we always do HDV screening in these patients, and that's standard of care here. Punjab, lower upper Punjab, that should be screened. Okay, thank you. Zishan, Kamran, you have anything to say? Uzair, unmute करें Kamran साहब को. So Kamran Right, probably sir. has disconnected. Kamran, Oh, I okay. saw he got disconnected. Farooq, Kashif have anything? joined, but Kashif didn't Here, has not here gone through the history. Okay, so यहाँ पर मैं एक बात जरूर बताऊंगा कि acute hepatitis को आप घर पे हैंडल करें. Symptomatic treatment, शुरू के दिन मुश्किल होते हैं. Aches and pains, fever, jaundice, itching, nausea, anorexia, vomiting, ये सब चीजें शुरू में होती हैं. जैसे जैसे jaundice ऊपर जाता है, ये symptoms बेहतर होना शुरू हो जाते हैं. Majority of the patients can be and should be managed at home. Indications for admission in acute hepatitis: 1, diagnosis is not clear. Please do not, especially if the bilirubin is high and INR is going up, you should admit the patients. You want to know the diagnosis. Number 2, intractable vomiting. You can't do anything at home if the patient cannot take anything orally. Even the liquids cannot be retained. So no medicine will work. So you need to admit to provide IV support and symptomatic treatment. And third, impending or already present hepatic encephalopathy. So these are the 3 conditions. What do I mean by impending? The patient is becoming slow. There is high bilirubin, high INR, and although there is no flap at the moment, you may think of that this patient may soon go into hepatic encephalopathy. Or if the patient comes with flapping tremor, drowsiness, or deep coma, these are the 3 conditions where you require admission. So coming to question number 2, Ji Kainat, question number 2 आपका क्या है? उज़ैर आप second case show कर दें. नहीं. How Question should we manage this patient? How should we manage this patient? Okay.
as far as management of this patient is concerned, the problem is already over. The patient has become asymptomatic probably by this time. The LFTs are normal, and hopefully INR is also normal at this stage. Hopefully there is no itching, no nausea, no anorexia, no vomiting as you normally see. So the problem is over. If the patient comes at this stage and is having anorexia, nausea, vomiting, feverish feelings, so you can manage symptomatically either at home or in hospital. The question has been asked with the viewpoint of whether you would be considering antiviral treatment in this patient either in this stage or 1.5 months later at this stage. So if you look at the guidelines suggest that the indication for treatment in acute hepatitis is severe acute hepatitis. By this, they mean that the bilirubin is high. Now, this is contentious issue. What is high bilirubin? Should it be 10? Should it be 20? Well, debatable issue, but something like a figure of 10 to 20 is high. INR, if more than 1.5, this is always worrying. So severe hepatitis, which is lasting more than 8 weeks, it did not. Here it was only 6 weeks. Severe hepatitis lasting more than 6 weeks, early impending or established hepatic encephalopathy. These are the indications where you should start antiviral treatment. And which antiviral treatment? You can choose between entecavir or tenofovir. I would not say TAF at this stage or tenofovir alafenamide because the patient is young, the kidney function is hopefully normal, although not given here, and there is no bone disease. So I don't see any indication for starting tenofovir alafenamide, but TDF or tenofovir disoproxil fumarate or entecavir may be started if these conditions are met. Severe hepatitis, that is very high bilirubin, high INR more than 1.5, deteriorating condition of the patient, impending or established hepatic encephalopathy, or prolonged jaundice lasting more than 8 weeks. So these are the indications where you can start nukes. The question arises that if you have such patient and you start nukes, when to stop it? Well, in acute hepatitis setting, I tell you, majority of patients would have recovered spontaneously. Say 95% or so would recover in terms of being surface antigen negative after 6 months. So they recover and they lose the virus. Anti-HBs appears and anti-HBC appears, and they carry these antibodies for a long period of time or maybe forever. But the 95% people recover. So you do not treat across the board. You only treat these 3 conditions which I have mentioned with antiviral drugs. And if you have started antiviral drugs, you stop them when the surface antigen disappears and anti-HBs appears and it has been present for 3 to 6 months. So this is the time to stop antiviral drugs. And in most patients, this is achieved within 6 to 12 months. So they do not require long-term therapy because surface antigen has disappeared, anti-HBs has appeared, and then you may stop therapy. So acute hepatitis को हमने कवर कर लिया, एंटीवायरल की इंडिकेशंस हमने डिस्कस किए, और अगर शुरू करेंगे तो कब बंद करेंगे ये किया.
और कोई चीज ऐड करना चाहें इसमें? काशिफ साहब इज हियर. काशिफ, वेलकम. अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम. थैंक यू वेरी मच. हाँ सर, इसमें सॉरी आज ज्वाइन लेट. एक तो ये है कि 18th of March मतलब the investigation chart is showing that anti-HBC IgM was positive and HBsAg is positive. That is 18th of March or it is 3rd February 2022. एक तो ये क्लियर करना था मैंने कि अगर ये अब तक पॉजिटिव है एंड LFTs आर नॉर्मल, तो अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गई ना इसके अंदर कि ये एक्यूट हेपेटाइटिस चल रहा है, क्या चल रहा है. सेकेंडली, आपने जो गाइडलाइंस की बात की वो ठीक है. मुझे ये एक थोड़ा सा इशू हमें आता है, वो दैट इज कि वी कैन नॉट डिसाइड कि दिस पेशेंट हु प्रेजेंट्स टू द टर्शियरी केयर सेंटर and it is having acute hepatitis or it may be subacute, because sometime patient की prolong होती है लेकिन वो 8 weeks वाली नहीं होती, या समटाइम पेशेंट शुरू में आ गया, बिलिरुबिन हाई होना शुरू होगी, ALT इज हाई, BDNA इज पॉजिटिव. तो व्हाट इज द हार्म टू स्टार्ट न्यूक्लियोसाइड एनालॉग, बिकॉज वो 5% में, तो इससे अगर क्रॉनिसिटी में जाना है, अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली वायरस क्लियरेंस जो है, मेरा ये ख्याल है कि दैट कैन हेल्प अस इन क्लियरिंग द सरफेस एंटीजन इन दीस पेशेंट्स. दो चीजें राइट, एग्जैक्टली. Anti-HBC IgM could remain positive for up to 6 weeks, so it is not an issue. Probably this was done earlier in the course of the disease. So, yes, if you start treatment, you will be treating 95% of people unnecessarily. But you can make a case that if you can save 5% of patients from going into chronic phase. Here I would make a point. If the patient has to go into chronic liver disease, which is decided not at 6 weeks, but at 6 months. If the surface antigen is persistent for 6 months, this is called chronic hepatitis. So if the patient goes into chronic stage, giving nucleoside analogs, if the DNA after 6 months is less than 2000, is not going to do much trick. The REVEAL study has clearly shown that the benefit of nukes is when the viral load is more than 2000. Less than 2000 in a non-cirrhotic patient, long-term complications are almost negligible. But anyhow, one can make a case to treat. You are not doing bad, but you will be treating 95% of patients unnecessarily. Any comment? Any other comment or question, please, before we finish off this case? Okay. So it seems that everything is clear. So this patient on merit does not require antiviral therapy, just symptomatic treatment and follow-up. Don't forget the follow-up. If the virus is still present at 6 months, this patient has chronic hepatitis, and then you will be doing all those tests: E antigen, anti-HBe, if not done, anti-HDV, HBV DNA by PCR, quantitative, fibroscan, etc., whatever. But then this is chronic hepatitis, which is a different ball game. So in acute hepatitis, you don't require all these tests, just surface antigen and anti-HBC IgM. And if surface antigen positive, always look for anti-HDV. Okay, so if no other questions or comments, can we proceed to case number 2? Uzair, can you share case number 2? Sure, sir. Dr. Kainat, can you see the screen? Yes, sir. Okay, please. Okay. So in the second case, we have a 26-year-old male who presented in OPD with the low-grade fever and malaise from last 2 weeks.
He's also a known smoker from 5 years. He takes 1 pack per day. He had history of IV drug for 3 years and no other comorbidity. On examination, he had injection scars on his arm. Abdomen was soft and ascites was negative. Chest on bilaterally showed wheezing and basal crypts. His medical history is insignificant and he had no previous history of liver disease. His investigations show on 13th May 2022 showed HB 13.0, platelet 282, bilirubin 1.0, INR 1.4, creatinine 0.8, ALT 120, AST 112, albumin 4.1. His HB surface antigen was positive. HBe antigen is positive. Anti-HB is negative. Anti-HCV is also negative. Anti-HIV 1 and 2 both are negative. Anti-HDV is positive. His HPV DNA by PCR is 3.5 into 10 raised to power 8. On ultrasound abdomen, he had normal liver and no ascites. Fibroscan is also done, which shows F0 and F1 fibrosis. The question is, do we need any further investigation? Secondly, is this patient a candidate for AVT? And thirdly, is liver biopsy required in this patient? That's all. Thank you, Dr. Kainath. So we have a 26-year-old IV drug addict, smoker, with non-specific symptoms, malaise, low-grade fever for 2 weeks. And on examination, abdomen is insignificant, but he has bilateral wheezing and basal cramps. So keep this in mind and don't ignore this. You have to treat the patient as a whole. So maybe you will be looking into that initially with X-ray and or pulmonologist opinion, etc., and treat his smoking related either asthma or chronic obstructive disease, whatever you find. So don't ignore this. And also IV drug addict. So don't ignore this. This patient needs help. This patient needs support. Whatever you have in a Western countries, there is a very organized support for IV drug addicts. There is a needle exchange program. They are provided with new syringes. So you need to provide all those as your patient has IV drug addiction. So coming to the liver problem, platelets are good. ALT and AST is high with no reversal of AST ALT. Albumin is good. Surface antigen positive. E antigen positive. Anti-HBe negative. C negative. HIV is negative, thankfully. Anti-HDV positive and very high viral load. 3.5 into 10 raised to the power 8. So this comes to be around 35 million or even more. So very high viral load in this patient. Coming to the question number 1, do we need any further investigations? Fibroscan and ultrasound has been given, which are both normal. So that is fine. Do we need any further investigations? I would certainly require basic chest X-ray. I would also require HDV RNA by PCR quantitative. Now we have to treat this patient. He's a source of infection to a large number of people if they are sharing his syringes. So we need to treat and also try and prevent this spread to other people and also get rid of his IV drug addiction through whatever support program you have wherever you are working. So this patient has B, E antigen positive B, and Delta virus, along with high viral load for BDNA. So investigations, chest X-ray, and HDV RNA by PCR quantitative. These are the 2 key investigations that I would need
before I decide whether I'm going to treat him, and if I'm going to treat him with what. So we stop here and discuss this point कि किसी के ज़हन में और कोई इन्वेस्टिगेशन है या क्वेश्चन है इस स्टेज पर. Any further investigation? Anyone? You can ask question. अगर नहीं तो हम experts के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कुछ ऐड करें इसमें. No question. Zishan, what would you say? So I agree with you. You already summarized it. Basic investigation is there. B की इंडिकेशन मौजूद है ट्रीटमेंट की हमारे पास, लेकिन ये है कि क्योंकि anti-HDV पॉजिटिव है तो डी का वायरल लोड भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ट्रीटमेंट डिसीजन उस पर मैटर करेगा कि एक्टिव वायरल हेपेटाइटिस डी है या नहीं है. जनरली स्पीकिंग जो एक्सपीरियंस हमारा है, वेरी हाई वायरल लोड HPV अगर आ जाता है तो अनलाइकली होता है कि डी का PCR पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जब डी जो है रेप्लिकेट कर रहा होता है तो वो बी के रेप्लिकेशन को सप्रेस करता है. So with a positive high viral load HPV, very likely this patient would come negative to HDV RNA, and then the decision of what to treat and how to treat would be easier. If D comes positive and a co-infection has to be treated, that is a very tricky and difficult situation nowadays. Okay. Kashif, would you like to add anything? Sir, I think it's very very well summarized, and basically, as Zishan said, and you said that we need delta. We need the status of delta, whether it is positive or it's a negative. Then we can plan the treatment in this patient. And obviously, as you said, just X-ray, that is for the other problem, because the IV drug abuser, it may be having, we might be having this tuberculosis or things like that, or maybe has chronic obstructive pulmonary disease. So I think in this basically, particularly in this patient, I don't think I need much of the investigation. If anything in your mind, Great. Dr. Kainath, do we have HDV RNA on this patient quantitative? Yes or no? Yes, sir. जी, क्या था? Sir, quantitative था. HDV RNA. नहीं सर, HDV नहीं था, B का सर PCR था. HDV का अभी एडवाइस किया था, लेकिन उसकी अभी रिपोर्ट नहीं आई. ओके, सो अब दोनों सिनारियो डिस्कस करेंगे. Anti-HDV पॉजिटिव, DRNA नेगेटिव. सो टिपिकल हेपेटाइटिस बी, और फिर तो काम आसान हो गया कि आप के पास 3 अप्रूव्ड थेरेपीज है. पैगाइलेटेड इंटरफ्रॉन अल्फा 2A, एंटीकावेर, TDF, और इन अप्रोप्रिएट सिचुएशन टैफ. सो ये आपके पास अप्रूव्ड थेरेपीज हैं. सो DRNA नेगेटिव आ जाए तो आप सिंपल इसको हेपेटाइटिस बी के लिए ट्रीट करें. और बंद कब करेंगे? बंद उस वक्त करेंगे जब ई एंटीजन सीरो कन्वर्ट हो जाएगी, यानी ई एंटीजन नेगेटिव हो जाएगी, anti-HBe पॉजिटिव हो जाएगी, ALT नॉर्मल, DNA सुप्रेस्ड, और ई एंटीजन सीरो कन्वर्शन का कंसोलिडेशन फेज 12 to 24 months हो चुका होगा, तो फिर आप ट्रीटमेंट स्टॉप करेंगे इन अ नॉन सिरोटिक ई एंटीजन पॉजिटिव हेपेटाइटिस बी डेल्टा नेगेटिव. अब देंगे क्या इसको? एंटीकावेर या TDF, दोनों में से कोई भी दे दें. इंटरफ्रॉन इज रेयरली यूज्ड, one because of side effects, cost, although it is available in at least in Punjab hepatitis control program. So आप अगर कोई इंडिकेशन हो तो दे सकते हैं फ्री ऑफ चार्ज. सो दूसरा आप सिनारियो ये है कि इसका HDV RNA पॉजिटिव आ गया और क्वांटिटी भी उसकी से 1 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर है. सो फिर क्या करेंगे? फिर आपके पास ऑप्शन एक ही है, पैगाइलेटेड इंटरफ्रॉन. डेल्टा पर इस वक्त
और दवाइयां काम तो करती हैं जो फेज 2 और फेज 3 ट्रायल में हैं और कुछ जगह पर अवेलेबल भी हो गई हैं लाइक इन यूरोप, लेकिन पाकिस्तान में आपके पास सिर्फ पेगाइलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2A है। Should you add nukes to it? This is questionable. I would not, क्योंकि ये सिरोटिक नहीं है, आपके पास बड़ा टाइम है। अगर इंटरफेरॉन से रिस्पॉन्ड ना भी हुआ 1 साल के बाद तो आप न्यूक्स शुरू कर सकते हैं फॉर बी और डेल्टा को आप डिक्लेयर कर सकते हैं नॉन रिस्पॉन्सिव। सो डेल्टा के लिए आपके पास पेगाइलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2A है, 180 माइक्रोग्राम सबकुटेनियस वीकली। ड्यूरेशन क्या होगी? जनरली एट लीस्ट 1 ईयर, लेकिन कुछ लोगों में अगर आप वायरल लोड आपने चेक किया 1 मिलियन यूनिट्स इंटरनेशनल यूनिट्स पर मिल है, आपने 3 माह के बाद चेक किया वो 1 मिलियन से 6,900 पर आ गया, 6 मंथ्स पे चेक किया 2,000 पर आ गया, 9 मंथ्स पे चेक किया 500 पर आ गया, 12 मंथ्स पे चेक किया पॉजिटिव है और अब भी 200 इंटरनेशनल यूनिट्स आ रहे हैं। तो ऐसे केस में आप थोड़ी ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, जहां आपने देखा कि वायरस तो नीचे आ रहा है लेकिन अभी तक नेगेटिव नहीं हुआ। सो ये वो कंडीशन है जहां पर आप ट्रीटमेंट को 1 साल से ऊपर लेके जा सकते हैं। कितना ऊपर इट्स अप टू यू, 1.5 साल 2 साल, जब वायरस नेगेटिव हो जाए तो फिर बंद करें, या अगर 2 साल के बाद भी वायरस नेगेटिव नहीं हुआ तो फिर बंद कर दें, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। So I would personally, in a non-cirrhotic patient, just start pegylated interferon. और 1 साल पे अगर डेल्टा खत्म हो गया लेकिन बी अब भी हाई वायरल लोड है तो आई विल स्टार्ट न्यूक्स फॉर बी। डेल्टा का पीछा छूट गया। डेल्टा के लिए और क्या ऑप्शंस हैं? वेल, फेज 3 जो ट्रायल जिस पर हो चुका है उसका वो एंट्री इनहिबिटर है मेरक्लूडेक्स बी, और उस पर फेज 3 ट्रायल हो चुका है। यूरोप में कंपैशनेट ग्राउंड पे अवेलेबल है और एफडीए के अप्रूवल के लिए पेपर सबमिट हुए हुए। प्रॉब्लम हमारा क्या है? इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव और सबकुटेनियस है। दूसरा प्रॉब्लम हमारा ये। डोज क्या है? 2 मिलीग्राम सबकुटेनियस डेली विद और विदाउट पेगाइलेटेड इंटरफेरॉन। अगर पेशेंट में पेगाइलेटेड इंटरफेरॉन की कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, लाइक जैसे डीकम्पनसेटेड सिरोसिस होता है या वो टॉलरेट नहीं कर रहा, तो फिर आप उसके साथ देंगे। अदरवाइज सिंगल एजेंट भी दे सकते हैं। अगर पेशेंट उसका इंटरफेरॉन का टॉलरेट नहीं कर रहा या ले ही नहीं सकता, कंट्राइंडिकेटेड। कौन सी कैटेगरीज में पेशेंट को दे सकते हैं? नॉन सिरोटिक को और कंपनसेटेड सिरोटिक को पेगाइलेटेड इंटरफेरॉन और मर्क्लूडेक्स बी, जिसको हेपक्लूडेक्स भी कहते हैं और बुलेवर्टाइड भी कहते हैं, 2 मिलीग्राम सबकुटेनियस डेली फॉर एटलीस्ट अ ईयर। और अगर वो पेगाइलेटेड इंटरफेरॉन नहीं ले रहा तो लॉन्ग टर्म भी दी जा सकती है टू कीप द वायरस सुप्रेस्ड, एंड इट हैज बीन शोन कि इट वर्क्स अलोन एज वेल। ये मेर 301 ट्रायल था जो कि लास्ट ईयर पब्लिश हुआ है, उसकी बेसिस ही पर इसके एफडीए अप्रूवल के लिए सबमिट किया गया। सो और ऑप्शंस में एक तो है मर्क्लूडेक्स बी, बुलेवर्टाइड या हेपक्लूडेक्स। दूसरी है लोनाफार्नेब। लोनाफार्नेब अभी फेज 3 ट्रायल में है। इट हैज नॉट इसका जो फेज 3 ट्रायल का रिजल्ट है ये अभी प्रेजेंट नहीं हुआ, इसलिए ये कहीं भी अवेलेबल नहीं है आउटसाइड ट्रायल्स। पाकिस्तान में भी आगा खान इज वन ऑफ द सेंटर्स जो पेशेंट्स को एनरोल कर रहा है। वो पेशेंट्स जो पेगाइलेटेड इंटरफेरॉन को रिस्पॉन्ड नहीं किया या इवन ट्रीटमेंट नाइव पेशेंट्स को, तो अगर आपके पास कोई हो डेल्टा का पेशेंट तो आप उसे भेज सकते हैं।
उनकी कंडीशन जरूर होती हैं, जैसे ट्रायल की होती है कि वायरल लोड इतना हो, ये हो, ये ना हो। सो वो बड़े स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होते हैं। सो ये मत कहें कि आगा खान ने इलाज तो दिया ही नहीं, इसको प्लेसिबो का भी चांस होता है कि इंटरफेरॉन के साथ प्लेसिबो मिल जाए या इंटरफेरॉन के साथ लोनाफार्निब मिल जाए। लोनाफार्निब इज ओरल, डोज उसका पर मीटर स्क्वायर कैलकुलेट किया जाता है और यूजुअली बिटवीन 115 टू 150 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है उसका डोज। सो वो दिया जा सकता है। इसकी अभी किसी को कोई कॉस्ट नहीं पता। इट इज नॉट अवेलेबल, इट इज ओनली अवेलेबल इन अ ट्रायल सेटिंग। जैसे मैंने बताया कि यूरोप में बुलेवर्टाइड या हेप्क्लूडेक्स अवेलेबल है। कॉस्ट इज $500 पर इंजेक्शन, विच इज 1 लाख रुपए पर इंजेक्शन, यानी रोजाना 1 लाख रुपए का टीका लगेगा। सो हमारे लिए तो ये ना होने वाली बात हुई ना जी काशिफ साहब। 1 लाख रुपए रोजाना का टीका फॉर इनडेफिनेट पीरियड या एटलीस्ट फॉर अ ईयर हमारे पेशेंट्स के लिए कोई प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं है। सो यस, इफ डेल्टा इज पॉजिटिव, these are the options. Pegylated interferon alpha 2A is the only treatment available in Pakistan. Lonafarnib, अगर ट्रीटमेंट नाइव है या ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस्ड है, फेलियर टू इंटरफेरॉन, आप उसे आगा खान रेफर कर सकते हैं फॉर पुटिंग इन फेज 3 ट्रायल, जिसमें वो लोनाफार्निब एंड पैगाइलेटेड इंटरफेरॉन या प्लेसिबो विद पैगाइलेटेड इंटरफेरॉन को कंबाइन करके देंगे और फेज 3 ट्रायल कंप्लीट होगा तो उसका डेटा आएगा कि ये कैसी है मेडिसिन और उसके अप्रूवल के लिए प्रेजेंट होगा। सो ये सिचुएशन है। जैसे डॉक्टर कायनात ने बताया कि इसका डेल्टा की रिपोर्ट अभी नहीं है, तो हमने दोनों ऑप्शंस डिस्कस कर लिए हैं। अगर कोई इस पॉइंट पर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है या कोई कमेंट देना चाहता है तो we'll be happy to take it now. Anyone for questions first? सर मेरा ये क्वेश्चन ये है कि हाउ कुड वी नो कि ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी है इस सिनेरियो में? Very good question. There are two options. You wait for 6 months and prove this point. 1, 2, पेशेंट का ऑलरेडी 6 महीने का डेटा मौजूद है, वो पॉजिटिव था और अब भी पॉजिटिव है। तीसरा, क्योंकि ये रिस्क है, आईवी ड्रग एडिक्ट है, दूसरों को फैला सकता है, सो आई वुड नॉट वेट एंड फॉरगेट अबाउट के क्रॉनिक है या नहीं, एंड आई वुड स्टार्ट ट्रीटमेंट। सो यही होता है नॉर्मल सिचुएशन में। अगर आपका कोई आपके पास डेटा है पहले का कि 3 महीने पहले ये सरफेस एंटीजन नेगेटिव था, तो यू कैन वेट फॉर 6 मंथ्स। कोई अर्जेंसी तो इसमें नहीं है। लेकिन अगर HDV RNA पॉजिटिव आ जाए तो फिर थोड़ा सा जनरली चांस ये होता है कि ये प्रोग्रेस करेगा, बट यू कैन इजीली वेट फॉर 6 मंथ्स इन अ नॉर्मल सेटिंग जहां पेशेंट सिरोटिक नहीं है। 1, 2, आपके पास डेटा है कि 3 माह पहले ये नेगेटिव था, अब पॉजिटिव है, और सो यू कैन, और पेशेंट आईवी ड्रग एडिक्ट नहीं है, तो यू कैन वेट। सो वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू फारूक। Any comment by Zishan and Kashif? No sir, बस इसमें जी काशिफ, जी बोले। नहीं काशिफ आप ऐड करें। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जैसे सर ने कहा कि फर्स्ट इसका डेल्टा इज पॉजिटिव एंड वी ट्रीट दिस पेशेंट विद पैगुलेटेड इंटरफेरॉन, इफ afterwards there is a just it's a co-infection and the BDNA is highly positive, so one should put the patient on nucleoside analog. Usually we have seen that with pegylated interferon at the end of the treatment, usually HBV DNA is negative, but there is a chances of relapse because the response rate is, according to the studies, is around 20-30%, but we have seen around 10 or 15% even with the interferon, pegylated interferon. So if the HDV RNA is negative and the BDNA is also negative,
do you recommend to switch the patient on nucleoside analog after stopping pegylated interferon if there is a co-infection? Right. Pegylated interferon is an immune modulating agent. So B के लिए डेल्टा पे तो आपने बताया कि रिस्पॉन्स कम है, अराउंड 20 to 25% ओनली, और जो रिलैप्सेस हैं वो भी 6 months में नहीं आ जाते, 1 साल में नहीं आ जाते, अप टू 5 years तक रिलैप्सेस आते हैं. सो लेट रिलैप्सेस आर वेरी कॉमन, और इसमें SVR की डेफिनेशन 6 months वाली नहीं है या 1 year वाली नहीं है. You keep on following the patient for relapse of delta which may occur even after 5 years. So वो तो बात हो गई. अगर आपने ट्रीट किया है और डेल्टा भी नेगेटिव हो गया है और बी भी नेगेटिव है PCR से, लेकिन सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है आफ्टर 1 year, तो I would observe in a non-cirrhotic patient. I would just observe. I would not worry much about this. अगर patient cirrhotic हो तो कहा यह जाता है कि please rule out all other causes of chronic liver disease, कि कहीं कोई और वजह तो नहीं है. और अगर आपने तमाम causes of liver disease rule out कर दी हैं, autoimmune, metabolic, etc., तो cirrhotic, surface antigen positive, DNA negative, blood में ऐसे पेशेंट में अगर आप लिवर बायोप्सी करें, बोन मैरो बायोप्सी करें तो शायद टिश्यूज में DNA मिल जाए, बट ब्लड में नेगेटिव है तो आप यू कैन मेक अ केस टू ट्रीट, ऑल्दो गाइडलाइंस अभी नहीं कहती. वो कहती है कि सिरोटिक में भी DNA पॉजिटिव हो तो आप इलाज करें, लेकिन certainly I can make a case to treat, and many people do. कि पेशेंट सिरोटिक है, सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, मैंने तमाम कॉजेज रूल आउट कर दी हैं, DNA नेगेटिव आ रहा है, तो आई वुड कंसिडर स्टार्टिंग थेरेपी इन अ सिरोटिक पेशेंट, नॉट इन अ नॉन सिरोटिक पेशेंट. आई वुड जस्ट फॉलो अप इस तरह का पेशेंट जिसका F0 F1 है, नॉर्मल लिवर है, 1 साल के बाद सरफेस एंटीजन सिर्फ पॉजिटिव आ रहा है, डेल्टा और बी दोनों का DNA नेगेटिव और RNA नेगेटिव है, तो आई वुड फॉलो अप. जी जीशान, आप कुछ कह रहे थे? जी बस सर वही बात थी कि जो PCR पॉजिटिव अगर डी का आ भी जाता है तो रिस्पांस रेट जो 15% तक का ही है जो आपने बात की, और रिलेप्स रेट जो है ना बहुत हाई है. इवन 1 year का जो है ना 50% तक अचीव अप्रोच कर जाता है. नाउ बिकम्स इवन डिफिकल्ट इन दीज पेशेंट्स के जो डी को इंटरफेरॉन के नॉन रिस्पॉन्डर हैं. Our practice is that कि इन पेशेंट्स में हम जो है वो न्यूक्स स्टार्ट कर देते हैं अगर बी का PCR फिर भी पॉजिटिव रहता है, लेकिन अगर बी का पॉजिटिव नहीं होता तो वी डोंट हैव एनीथिंग एंड वी कैन वेट फॉर एनी ट्रायल टू कम पॉजिटिव एंड ड्रग टू बी अवेलेबल. राइट. एक जो डेटा मैंने देखा था, जैगम साहब ने एक ट्रायल किया था, आई डोंट नो उनसे बात करेंगे, उन्होंने इजीटर्मिप के ऊपर एक ट्रायल किया था जिसमें उनको 60% तक का रिस्पॉन्स भी मिला था. राइट. और इसके ऊपर फेज 3 ट्रायल जो है ना विद कॉम्बिनेशन चल रहा है. एजिटेमिब का ऑलरेडी अभी एनरोल हो रही है इंटरनेशनली इसके ऊपर, बट इट्स येट टू सी. मेरी प्रैक्टिस में है कि मैं कुछ लोगों को देता हूँ, अगेन 50-50 है कि जिनका नेगेटिव आता है विद इन 1 month to 3 months नेगेटिव आ जाता है डेल्टा PCR इन पेशेंट में. जी बिल्कुल. आपका कोई एक्सपीरियंस है जीशान लिविंग इन कराची, आपके कोई पेशेंट लोना फार्निब और पैगाइलेटेड इंटरफेरॉन के ट्रायल में एनरोल हुए हों आगा खान के? सर ये मुझे अभी पता चला है. आई विल टॉक टू जैगम साहब के जो अभी आपसे ही पता चला है. आई वाज अबाउट टू टॉक टू देम क्योंकि हमारे पास काफी पूल है पेशेंट्स का जो कि इंटरफेरॉन नॉन रिस्पॉन्डर्स का है. क्योंकि मेरे पास कंप्लीट नहीं हो गया हुआ. लास्ट में मुझे जो पता चला था 2 महीने पहले कि वो कह रहे थे कंप्लीट हो गया ये जो है. जी काशिफ, आपका भी तो एक डॉक्टर ट्रीटमेंट पे वो था है ना, उसी से मुझे पता चला था कि वो कह रहे थे, वो आया था और इसके बाद मेरी वैसे भी बात हुई थी उनसे मुल्तान में सईद हाफिज साहब से. मुझे लग रहा है कि ये इन्होंने कंप्लीट कर दी है. वो कह रहे थे हमने कंप्लीट कर दिया. हाँ जी, जो इन्होंने जितने चाहिए थे ना उनको पेशेंट्स यहाँ से पाकिस्तान से, वो हो गए थे पूरे, क्योंकि वो कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पेशेंट दिए गए थे ना. ओके. सो इंडेफिनिट नहीं था कि चलाते जाइए, टाइम पीरियड में टाइम बार नहीं था.
उन्होंने नंबर ऑफ पेशेंट्स दिए थे कि आप इतने पेशेंट्स में करेंगे, तो वो मेरा ख्याल कंप्लीट हो गया। ओके ओके, सो आपके पास ये ऑप्शन भी नहीं है, लोनाफार ने ट्रायल की, सो ऑल यू हैव इज पेगाइलेटेड इंटरफेरॉन एंड न्यूक्स, यूज देम as indicated and use them efficiently. डेल्टा की ट्रीटमेंट अगर आप पेगाइलेटेड इंटरफेरॉन से कर रहे हैं तो मेरा मशवरा ये है कि HDV RNA by PCR क्वांटिटेटिव एवरी 3 months चेक करते रहें और 12 months पर इस बात का फैसला करें कि आपने स्टॉप कर देनी है, या तो रिस्पॉन्स ही नहीं आया, वायरस का कोई 2 log से कम नीचे आया ही नहीं, या सो यू वो उसका अगर नीचे आ रहा है तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आया ही नहीं तो देयर इज नो पॉइंट इन कंटिन्यूइंग विद थेरेपी। इसमें सर आप कौन सा यूज कर रहे हैं, किस कंपनी का यूज कर रहे हैं इंटरफेरॉन? बिकॉज जो ओरिजिनल वाली थी पेगाइलेटेड इंटरफेरॉन पेगासिस या रोपेग्रा, दैट इज नॉट अवेलेबल नाउ जी, तो हमारे पास तो जो दूसरे आ रहे हैं उनके अंदर तो रिस्पांस तो इतना मतलब डिसअपॉइंटिंग है। मेरे कुछ पेशेंट्स हैं मुल्तान वगैरह इधर से, एंड वही वाली बात है कि उनका वायरल लोड उस तरीके से नीचे आ नहीं रहा। आप किस कंपनी का यूज कर रहे हैं, कोई आपका आइडिया है इसका? आप बेहतर बता सकते हो। जो पंजाब का प्रोग्राम है, हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, उसमें मुझे पता चला था कि रोपेग्रा है और मेरे कुछ पेशेंट्स ने ली भी थी, अब है या नहीं है? पहले ली थी उन्हें। अच्छा। नहीं ये तो खत्म हो नहीं गया सर, ना, अब तो रोपेग्रा का तो पाकिस्तान से बेसिकली प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि जी अगर आप बनवाएंगे, जो उन्होंने रेट दिया था वो तो उन्होंने कहा कि हम आपके लिए स्पेशल बनवाएंगे बाहर से और ये करेंगे। ये तो शुरू में ही हमें मिली थी, उसके बाद फिर ये 19 के बाद तो शायद आई नहीं, 18 के बल के बाद नहीं आई। बाकी तो हम तो अभी जो प्राइवेटली देते हैं तो वो अल्फा 2B है। अल्फा 2B का एज सच हमारे पास कोई डाटा नहीं है जो उसको इनकरेजिंग इतना Right. हो, लेकिन जब हम डेस्परेट होके दे रहे हैं और रिस्पांस इज नॉट एज गुड एज विद अल्फा 2A। राइट, अगर मैं अपने तौर पे प्राइवेटली यूज करूं तो मेरे पास सिर्फ पेग INF है जो मेरी नॉलेज है, जो कि फिरोज सन्स की है, सो आई यूज दैट, और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मेरे शुरू में पेशेंट्स, जैसे मैंने बताया, पंजाब हेल्थ प्रोग्राम से उन्होंने रोपेग्रा ली थी, लेकिन अब जो पेशेंट्स ट्रीटमेंट पर हैं वो सब पेग INF पर है। जी सर यही ऐसा ही है सर, ऐसा ही है है। सर। अभी तो कोई और इनफैक्ट सिंध के अंदर तो जो CM प्रोग्राम है उसके अंदर इंटरफेरॉन है ही नहीं, और जो आया है वो सिर्फ फिरोजन के पास अवेलेबल होता है, बड़ा लिमिटेड, वो भी उनके पास बहुत ज्यादा नहीं लिमिटेड, होता। वेरी वेरी लिमिटेड। So, okay, is liver biopsy required in this patient? जीशान, काशिफ और मैं अब लिवर बायोप्सी बहुत कम करते हैं, so hardly ever we do a liver biopsy in such patients जहां पर ट्रीटमेंट का फैसला बड़ा क्लियर कट है। so अभी भी आप हैव बी कंसल्ट और ये खास तौर पे यूरोपियन एप्स अगर यूज करें, उसमें पेशेंट का डेटा ला लें तो वो कहेंगे इसकी लिवर बायोप्सी करो, बट वी हार्डली एवर डू इट, एंड US में भी नहीं करते, बहुत कम करते हैं इफ एनी। सो थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये है कि नो, liver biopsy is not needed. We can decide without liver biopsy based on the data given to us. Zishan, do you agree? एग्री सर, वायरल हेपेटाइटिस में वेरी रेयरली वी डू, वेरी वेरी। काशिफ, आप आजकल कर रहे हो लिवर बायोप्सीज B में? सर इस पर्टिकुलर केस में तो बिग नो, लेकिन वैसे अगर उनके LFTs नॉर्मल हो एंड देयर इज मतलब जो इन्वेस्टिगेशन शोइंग के देयर मतलब सम काइंड ऑफ क्रॉनिक हेपेटाइटिस और अर्ली सिरोसिस का, तो देन वी हैव टू गो विद द लिवर बायोप्सी। बट इफ नॉर्मल LFTs एंड हाई वायरल लोड एंड डिफरेंट मतलब केस टू केस वेरी करते हैं, तो तब हम सर करते हैं बायोप्सी Right. टू जस्ट टू लुक फॉर द क्रॉनिक हेपेटाइटिस और जो है या फाइब्रोसिस वगैरह के लिए। इन दिस पर्टिकुलर केस अगर आप मुझे देंगे तो मैं इसमें बिग नो है कि ये नहीं करूंगा। Right. So इसको liver सर सिंपलीफाई, जी। सर जस्ट सिंपलीफाई अगर हम कर दें कि अगर हमारी सीरोलॉजी जो है, बायोकेमिस्ट्री है, और जो हमारा क्लिनिकल इक्विपमेंट है, जजमेंट है, और जो इलास्टोग्राफी स्कोर्स है, इसमें कहीं अगर जो है डिसएग्रीमेंट है
तो in that case biopsy required होगी, otherwise अगर ये सारी चीजें एक लाइन में ही हैं हमारी के हिस्ट्री है तो then we don't need biopsies. So मैं क्या करता हूँ लिवर बायोप्सी से बचने के लिए, मैं अपना ट्रिक बता दूं। मैं दो चीजें करता हूँ, एक तो फाइब्रोस्कैन विच इज अवेलेबल टू एवरीवन, और दूसरा मैं ये करता हूँ मैं कि सरफेस एंटीजन क्वांटिटेटिव, क्योंकि और मेरे पास कोई डेटा और कोई चीज नहीं है। मेरे पास हेपेटाइटिस बी कोर रिलेटेड एंटीजन नहीं है जो जापानीज कर रहे हैं, और उनकी गाइडलाइंस में भी शामिल हो गया है कि सरफेस एंटीजन क्वांटिटेटिव एंड हेपेटाइटिस बी कोर रिलेटेड एंटीजन, सो वो उनकी गाइडलाइंस में शामिल है। लेकिन मैं क्या करता हूं कि जहां पर वायरल लोड 2000 से थोड़ा कम है, ALT बहुत ज्यादा नहीं है या नॉर्मल है, और मैं लिवर बायोप्सी से बचने के लिए दो चीजें कर लेता हूं। फाइब्रोस्कैन अगर उसमें F2, 3 या 4 है, द पेशेंट गोज ऑन ट्रीटमेंट। अगर सरफेस एंटीजन क्वांटिटेटिव इज मोर देन 1000, I put the patient on treatment, because अब डेटा मौजूद है कि जिसमें सरफेस एंटीजन क्वांटिटेटिव ज्यादा हो, these are the people who do not do well in the long run, and these are the people who have true chronic hepatitis. और तीसरी आपने बात कर ली, काशिफ साहब ने जैसे कहा, डाउटफुल केसेस में लिवर बायोप्सी करें और देखें कि उसमें इन्फ्लेमेशन कितनी है, which is more than A2, और फाइब्रोसिस अगर more than F2 है या F2 या more, तो you can start treatment. So agreed. So मेरा इसमें फाइब्रोस्कैन और सरफेस एंटीजन क्वांटिटेटिव are the two things that I do to start treatment in doubtful cases, short of liver biopsy. So I can make a decision based on these two. कोई question? अब we are only 5 minutes, rather 4 minutes left. So if there are any questions to any one of us, please feel free to ask now. सर अगर यही सिनेरियो हो, इन्वेस्टिगेशन पैरामीटर्स सेम हो, सिर्फ उसमें बी का DNA नेगेटिव हो और डेल्टा वायरस का लोड बहुत ज्यादा हो, तो फिर हम इसको कैसे लेके चलेंगे? डेल्टा को ट्रीट करेंगे, क्योंकि जैसे जीशान ने कहा कि डेल्टा में आर्म्स कर देती में बी सुप्रेस्ड, सी की मौजूदगी में भी बी सुप्रेस्ड। सो आप ट्रीट करेंगे डेल्टा को, और जब 1 साल पूरा हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा, तो बी के लिए फॉलो अप करते रहेंगे और डेल्टा के लिए भी करते रहेंगे। सो यस, दिस इज द ऑप्शन। जो आपने सिनेरियो पूछा है उसमें आप डेल्टा को जरूर ट्रीट करें। थैंक यू। Okay, if there are no more questions or comments, over to Zair to close the session. Thank you. Or Thank if you very Kiran much, is sir. around. Yes, Ms. Kiran, please carry on. Thank you very much, Dr. Altaf. Sorry for being late. Thanks to all spokes for joining in. I hope आपको आवाज आ रही है मेरी? Yep. So we do encourage cases from the spokes as well, and we would like that spokes can present their own cases. But अगर किसी किस्म की hesitation है, तो you can always request me or Uzair for the forms और format जो हम आपको provide कर सकते हैं for cases presentation, और इसके अलावा हम आपके cases खुद भी present कर सकते हैं. And so we are grateful and thankful to Pakistan Society of Hepatology and Ferocins Laboratories Limited for the unrestricted educational grant, and team at Parsa Trust and Parsa Eco Pakistan. Allah Hafiz. Uzair, you can please call off the meeting. Sure, ma'am. Allah Hafiz, everybody.